Hello children, how are you? Children, in this video I am going to start exercise 8.4 of chapter 8 Algebraic expression and identities of class 8, and this is according to the revised NCERT syllabus. Okay, so children, in exercise 8.4 the first question is multiply the binomials. बाइनोमियल्स माने ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनके दो टर्म्स होते हैं, जिनमें दो टर्म्स होते हैं. ओके, तो हम दो बाइनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन इस क्वेश्चन में करेंगे. ओके, सो चिल्ड्रन लेट्स स्टार्ट. सो इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इट इज द फर्स्ट बाइनोमियल इज 2x plus 5 and the सेकेंड बाइनोमियल इज 4x minus 3. ओके, तो हमें 2x plus 5 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करना है? 4x minus 3 के साथ करना है. ओके चिल्ड्रन, सो व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू take the first term of this binomial and here it is what? Multiplication sign. So we will multiply the second binomial. We have to multiply the first term of the first binomial with the second binomial. In simple way, जो आपका बाइनोमियल पहला बाइनोमियल है उसका जो फर्स्ट टर्म है, इसका फर्स्ट बाइनोमियल का फर्स्ट टर्म क्या है? 2x. उसका मल्टीप्लिकेशन हम दोनों टर्म्स के साथ करेंगे सेकेंड बाइनोमियल के. ओके, सो 2x इज मल्टीप्लाइड विथ 4x minus 3. ओके, नाउ चिल्ड्रन व्हाट इज द साइन हियर? प्लस है ना, प्लस 5. सो पुट प्लस साइन हियर एंड देन सेकेंड टर्म क्या है फर्स्ट बाइनोमियल का? 5. अब इस बाइनोमियल का जो सेकेंड टर्म है उसका भी मल्टीप्लिकेशन ये दोनों टर्म्स के साथ होगा, मीन्स 4x minus 3 के साथ होगा. ओके, सो 2x into 4x will be 4 2s are 8 and x into x is your x square minus 2x into 3 is your minus 6x. ओके, यहाँ पे प्लस का साइन है. 5 4s are 20x and plus minus minus by 3s are 15. ओके, फिर से एक बार मैं आपको बता रही हूँ कि जब हम दो बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो पहला बाइनोमियल है उसके दोनों टर्म्स को आप सेकेंड बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. मतलब जिसका फर्स्ट टर्म है 2x उसका मल्टीप्लिकेशन ये दोनों टर्म्स के साथ होगा सेकेंड बाइनोमियल का. 5 है, इसका मल्टीप्लिकेशन ये दोनों टर्म्स के साथ होगा सेकेंड बाइनोमियल की. ओके, नाउ मल्टीप्लिकेशन ओवर होने के बाद व्हाट वी आर गोइंग टू डू? जो भी आपके लाइक टर्म्स हैं अगर वो एडअप होते हैं या सब्ट्रैक्ट होते हैं तो वी डू अकॉर्डिंगली. ओके, सो 8x स्क्वायर कोई भी लाइक टर्म्स और है नहीं, x स्क्वायर जो कंटेन करता है. Now this minus 6x and 20x is there. They are like terms because they contain the variable x. Okay. So minus plus is your minus, but the sign will be of the bigger number. So 20 minus 16 your plus 14. Plus 14 इसलिए लग रहा है क्योंकि 20 is bigger and it is positive. Okay. Minus 15. So this is the solution of the first question, children. In the second question, the two binomials are y minus 8 and 3y minus 4. We have to multiply these two binomials. Okay, so y minus 8 multiplied by 3y minus 4. तो ये जो फर्स्ट बाइनोमियल का के जो दोनों टर्म्स हैं y और माइनस 8 उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम सेकेंड बाइनोमियल के दोनों टर्म्स के साथ करेंगे. ओके, तो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म हियर ऑफ द फर्स्ट बाइनोमियल? y. y का मल्टीप्लिकेशन ये सेकेंड बाइनोमियल के दोनों टर्म्स के साथ हम करेंगे. सो इट विल बी 3y minus. ओके, व्हाट इज द साइन हियर चिल्ड्रन?
-8. So you are going to put here -8. ओके, अब इसका मल्टीप्लिकेशन भी हम दोनों टर्म्स के साथ करेंगे। जो आपका सेकेंड बाइनोमियल है वो दोनों टर्म्स के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। ओके, नाउ 3y into y is your 3y square minus, okay, minus 4y. Okay, then -8 into 3y is your minus 24y. -8 into -4 will be your plus 32. Okay, now अगर लाइक टर्म्स है तो आप उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो यहाँ पे आपके लाइक टर्म्स क्या क्या है, -4y और -24y। ओके, तो -4y -24y will be -28y plus 32. Okay, children? Children, in the third part of the first question, 2.5L minus 0.5L is multiplied by 2.5L plus 0.5L. Children, here in this question we can apply the algebraic identity. Okay, so one of the algebraic identity is A minus B multiplied by A plus B is equal to A square minus B square. आप दोनों तरीके से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। आप algebraic identity का आप यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, बट आई थिंक इट विल बी ईजियर फॉर यू। ओके, तो आप यू कैन जस्ट सी A minus B into A plus B means here A is your 2.5L and your B is 0.5M. Okay, now simply what you have to do, 2.5L minus 0.5M multiplied by 2.5L plus 0.5M and that is equal to आपका A क्या है, A is your 2.5L, so 2.5L का square minus your B is your 0.5M, so 0.5M का whole square. Okay, so 2.5L का whole square मतलब we have to multiply 2.5L twice, 2 times. Okay, so 2.5L into 2.5L is your 6.25L square minus the 0.5M का whole square is your 0.25M का square. So this is your solution. Okay. Hello children, back to the video in a second, but before that I want to inform you all that I am taking online classes also. So if you are really liking my videos and you are okay with the explanation, so you can join the Telegram group of mine. The link is given in the description. Thank you. And in the fourth part, we have to multiply the binomial A plus 3B with the binomial X plus 5. Okay. So A plus 3B multiplied by X plus 5. Okay. तो पहले बाइनोमियल के जो फर्स्ट टर्म है उसका मल्टीप्लिकेशन आप दोनों टर्म्स से करेंगे ऑफ द सेकेंड बाइनोमियल. सो इट विल बी रिटन एज A into X plus 5. ओके, फिर यहाँ क्या साइन है, प्लस का साइन है, सो यू विल पुट हियर प्लस साइन. ओके, देन द सेकेंड टर्म ऑफ द फर्स्ट बाइनोमियल इज 3B. अब इस 3B का भी मल्टीप्लिकेशन हम दोनों टर्म्स के साथ करेंगे ऑफ द सेकेंड बाइनोमियल X plus 5. Now, when A is multiplied with X, it will be AX plus 5 multiplied by A is 5A plus 3B multiplied by X is your 3BX plus 5 3s are 15B. Okay, I cannot find any like terms here. Okay, here it is a like term AX plus 3BX. So you can write in a way कि आप इसको AX plus 3BX plus 5A plus 15B. You can write, you can take X as common and you can write as A plus 3B plus 5A plus 15B. Okay, आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप यहाँ तक भी करेंगे, देन ऑल्सो यू आर करेक्ट. ओके चिल्ड्रन,
In the fourth part, we have to multiply the binomial 2pq plus 3q square with 3pq minus 2q square. Okay, तो फर्स्ट टर्म जो है फर्स्ट बाइनोमियल का वो 2pq है. हम उसका मल्टीप्लिकेशन पहले दोनों टर्म्स ऑफ द सेकेंड बाइनोमियल के साथ करेंगे. सो इट इज 3pq माइनस 2q स्क्वायर. ओके, अब यहाँ क्या साइन है? प्लस का. सो यू विल पुट हियर प्लस साइन. It will be 3q square. अब इस सेकेंड टर्म का मल्टीप्लिकेशन सेकेंड बाइनोमियल के दोनों टर्म्स के साथ करेंगे. ओके, आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन मेंशन करिए, नहीं करिए, दैट इज सेम. ओके, it is meant that it is multiplied if there is no sign present here. Okay, so 2pq into 3pq is your 3 2s are 6. P multiplied by P is your P square. Q multiplied by Q is your Q square. Okay. Then 2Q PQ का multiplication of minus 2Q square के साथ करेंगे. 2 2s are here plus minus minus 4 P Q का cube. Here the laws of exponents. Here the power is 1 and here the power is 2. So 2 plus 1 3. Okay. Plus अब इस सेकेंड टर्म का मल्टीप्लिकेशन पहले 3pq के साथ होगा. तो 3 3s are 9 and p and q square into q is your q plus minus minus 3 2s are 6. q square into q square is your q का power 4. Okay children, now 6p square q square. Here it is like term, it is also having pq q and here also pq q. So plus minus minus, but the sign will be of the bigger number, so it will be 5 plus 5p q minus 6q 4. Okay children. In the last part of the first question, we have to multiply the binomial 3 by 4a square plus 3b square and 4 multiplied by a square minus 2 by 3b square. ठीक है, तो यह 4 जो है यहाँ पे multiplied है. Okay, so you can multiply this 4 inside this bracket. मतलब आप ये 4 का मल्टीप्लिकेशन आप ये दोनों टर्म्स के साथ करिए. So it will be 4a square minus 4 is 8 by 3 b square. So we got two binomials here now. और follow the same procedure. 3 by 4 जो फर्स्ट टर्म है a square 3 by 4 a square जो फर्स्ट टर्म है उसका मल्टीप्लिकेशन दोनों टर्म्स से करेंगे ऑफ द सेकेंड बाइनोमियल. ओके, then plus का sign plus 3b square multiplied with both the terms of second binomial. Okay children, now 3 by 4 a square into 4a square minus 3 by 4 a square multiplied by 8 by 3b square. Okay, the first term multiplied with both the terms of the second binomial plus 4 3s are 12 a square b square plus minus is your minus, so it will be 3b square multiplied by 8 by 3b square. Okay, see 4 ones are 4. Okay, it got cancelled and 3, the bases are same, so the powers are going to be added, so 2 plus 2 it will be 4. Okay, now 3 ones are 3 and 4 ones are 4, 4 twos are 8. Okay, so it will be minus 2 a square b square plus 12 a square b square minus this 3 ones are 3. Okay, now it will be 8, the bases are same, b square into b square, so it will be b to the power
4. Okay, now it will be 3 raised to power 4 plus minus minus. So 12 minus 2, it will be 10. 10 a square b square minus 8 v raised to power 4. So this is the solution of the last part. Okay children, if you are okay with the explanation and still if you have not subscribed to the channel, then kindly subscribe to the channel and don't forget to hit the like button. Thank you.